Well, praise the Lord once again. And God is good all the time, and all the time God is good. Amen. You know, this evening, the message which I wanted to share this evening, which I had entitled, The One Who Controls the Storm. The One who controls the storm. Amen. हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे storms आती हैं. There are storms sometimes which comes in our life also. It can be a storm of sickness. It can be a storm of financial problem. हो सकती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ऐसी बाधा आ जाए, हो सकती है कि बीमारी की ऐसी बाधा आ जाए, और ये सारी बाधा एक स्टॉर्म के समान होती है. लेकिन क्या आज आप उस स्टॉर्म में खोना चाहते हैं या आप उस स्टॉर्म से निकलना चाहते हैं? Do you wanna come out from the storm, or you wanna confuse yourself, or you wanna just be inside the storm? Oh, I'm fine, I'm okay. मैं ठीक हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, मुश्किल भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, टल जाएगा. हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी. लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस स्टॉर्म से निकालना चाहता है. God wants to take you out from that storm. Amen. One thing which God wants each one of us this evening is to believe in Him, to trust in Him. क्या आप तैयार हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए? Amen. You know, I want to read from Mark chapter 4. The Gospel of Mark chapter 4. And there was something which happened this evening. कुछ ऐसा हुआ उस शाम को. And what happened? It says in Gospel of Mark chapter 4 and verse 35 onwards. मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय और उसकी 35वें वचन में ऐसा लिखा है. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." He was already on the boat, so they started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm arose. High waves began to break into the boat until it was nearly full of water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Frantically they woke him up shouting, "Teacher, don't you even care that we are going to drown?" When he woke up, he rebuked the wind and said to the water, "Quiet down." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. And Jesus asked them, "Why are you so afraid? Do you still not have faith in me?" And they were filled with awe and said among themselves, "Who is this man that even the wind and the waves obey him?" Amen. Amen. Hallelujah. Who is this man that even the wind and the waves obey him? You know, this evening my message speaks about the authority of Jesus. The message speaks about that Jesus has the authority. Jesus has the control over the storms. Jesus has controls over the storms which comes in your life. आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परमेश्वर के पास उसका सलूशन है, परमेश्वर के पास उसका कंट्रोल है. क्या आप तैयार हैं परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए? Are you all ready to trust in Him? All He wants from us is this evening, trust in me. What does it say? Why are you so afraid? आप क्यों डरे हुए हैं आज? जब मुश्किलें आती हैं हम डर जाते हैं, जब मुश्किलें आती हैं तो हम भागना शुरू कर देते हैं. लेकिन परमेश्वर कह रहा है, Why are you so afraid? Do you still not have faith in me? क्या तुम्हारे पे अभी तक मेरे पे विश्वास नहीं है? You know, the story of Jesus calming the storm is a story that about the revelation of Jesus as God. In addition, we have the reminder that He can be trusted. वो हमको हमेशा बार बार रिमाइंड करा रहा है कि तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो. क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए परमेश्वर पे? Like the disciples, we must consider whether we will respond to the situation of our lives
with faith in God or with fear of our situation. Amen. जिस तरह परमेश्वर के चेलों ने क्या करा, उस समय उनका रिस्पॉन्स कैसा था? उनका रिस्पॉन्स था, उन्होंने जब उस सिचुएशन को देखा तो वो डर गए। क्या आज आपका सिचुएशन कैसा है? आपका रिस्पॉन्ड कैसा है? What is your response towards the storms which comes in your life? He wants to have a relationship with you. He wants to show what he can do in your life. Let's not run away from that problem, but let's focus on what God has for us. Let's trust in him. Let's face it. Amen. You know, when storms comes in our life, storms in life have the ability to bring to the surface what's really inside of you. Amen. Hallelujah. When storm comes in our life, it actually shows what reality is in your life. जब मुश्किलें आती है हमारे जीवन में, तब दिखता है हमारे जीवन में कि हमारा जीवन कैसा है, हम किस तरह के विश्वासी हैं. What kind of believers are we at that moment? Do we believe in the Lord and say, yes, no matter what happens, no matter what situation comes in my life, I trust in my God because my God can do everything. With man it is impossible, but with God all things are possible. Amen. Hallelujah. What is your response when storms comes in your life? Storms reveal to you whether you live by fear or you live by faith. Amen. Hallelujah. जब मुश्किलें आती हैं तब वो रिवील करता है आपके और मेरे जीवन में कि आप डर के जीते हैं या विश्वास करके जीते हैं. Amen. Now I am keeping it to you. मैं आपके ऊपर रख रहा हूं, आप किस तरह से जीते हैं. जब आप एक विश्वासी हो करके, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आप उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? क्या आप डर के जीते हैं या आप विश्वास करके जीते हैं परमेश्वर पे? Amen. The way we react to God during a storm reveals the truth about ourselves. जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, उस समय हमारा जीवन कैसा होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन को. हाउ डू वी रिएक्ट? डू वी से थैंक यू लॉर्ड दैट आई एम सिक, थैंक यू लॉर्ड, आई नो लॉर्ड आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, बट आई नो लॉर्ड दैट यू कैन डू एवरीथिंग, but with me it is impossible, Lord, but with you, God, all things are possible. Lord, you can heal me, Lord, you can take me out from this situation. Lord, I know that I do not have a job right now. मेरे पास जॉब नहीं है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि आप मुझे जॉब मुझे दिलाएंगे. मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी. I will not lack anything because I serve a true and living God. Amen. Hallelujah. You know, we need to show the devil, हमें शैतान को, डेविल को दिखाना है कि चाहे मेरे जीवन में कैसी भी मुश्किलें आई, कैसी भी परेशानी आएंगी, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. What happened at that moment? The disciples knew what Jesus could do. यीशु मसीह के चेलों को पता था कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ उस समय जब मुश्किलें आई, जब उन्होंने देखा, when they saw the storm coming, when they saw the waves coming, they got scared. Amen. Hallelujah. And what Jesus was doing? Jesus was sleeping. Don't you think he didn't knew that? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को नहीं पता था? यीशु मसीह को पता था, लेकिन उस समय यीशु मसीह जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उस नाव में बैठा हूं. I am with you in that situation. I am with you in that sickness. Do you still trust me? Do you still love me? Will you still call me? Will you still say, thank you, Lord? Amen. You know, Psalms 23 says that even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, चाहे मुझे उस दौर से भी क्यों ना गुजरना पड़े, मैं जानता हूं कि मेरा यीशु मसीह मुझे उस चीज से निकालेगा. मेरा यीशु मसीह मुझे सारी कठिनाई, उन सारी चीजों से मुझे परमेश्वर निकालेगा. He wants to take you out. You know, storms are like testing. जब मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलें उस समय
हमको टेस्ट करता है, हमको परखता है. नंबर वन, storms are test. It is during the storms of life you discover what you really believe. आप किस पे विश्वास करते हैं उस समय? क्या आप मनुष्य पे विश्वास करते हैं? क्या आप अपने लोगों पे विश्वास करते हैं? या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? Storms have a way of revealing the truth about you. वो रिवील करता है कि आपका जीवन कैसा है जब मुश्किलें आती हैं. हाँ, मैं एक सच्चा मसीह हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं. हम बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है, जब प्रैक्टिकली जब सामने चुनौती आती है, तब हमारा उस समय हमारा सिचुएशन कैसा होता है? हाउ डू वी एक्ट? It's not just about speaking with your mouth. Faith is not just about speaking with your mouth. विश्वास सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है. विश्वास तभी होता है जब आप उसको अमल करते हैं. When you act on that, that's what faith is all about. How do you act? Do you still worship the Lord? Even in that sickness, when you are in that sickness in your bed, do you still come on your knees? क्या आप अपने घुटनों में आके कहते हैं, परमेश्वर मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं बीमार हूँ प्रभु, लेकिन मैं अपने घुटनों में आके प्रभु मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रभु, मैं जानता हूँ कि चंगाई आपसे आती है. लॉर्ड, आई नो दैट हीलिंग कम्स फ्रॉम यू. आमेन, हालेलुया. कैन वी डू दैट? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम उस टेस्ट को कर सकते हैं? Secondly, storms can happen suddenly. It can happen any time. Amen. कभी भी हो सकता है. What happened at that moment in verse 37? क्या हुआ था? But soon a fierce storm arose. क्या हुआ उस समय? When the disciples and when Jesus was inside that boat, suddenly there was a storm. क्या हुआ? अचानक से storm आया. अचानक से मुश्किल आई उस समय. It can come any time. You can never say that nothing will happen to me. You can never say that I will never be sick. Well, praise the Lord if you are absolutely fine. I praise the Lord for that. And I don't even want that sickness should come. But it is something, it can come anytime, suddenly. Are you ready for that? Are you prepared? What happened at that moment? Storm, it came suddenly. Do you think the disciples were ready for it? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह के चेले तैयार थे? यीशु मसीह तैयार थे, उनको पता था. But the disciples never knew about it. Storms can happen suddenly. Storms can happen suddenly. And Jesus knew about that. Problems can come suddenly. It can come anytime. It will never tell you that I'm coming. At that moment, Jesus knew that there will be a storm. And the storm was a part of it was like a lesson to those disciples. Jesus was trying to teach them that don't worry, I am there with you. Today, Jesus is trying to teach each one of us a lesson that no matter what situation comes, चाहे जितनी भी मुश्किलें आई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं. You don't have to be afraid. You don't have to be scared of anything, because I am there with you. Amen. He's teaching each one of us. Are we ready to learn that? क्या हम तैयार हैं? कैसे हम उसको learn कर सकते हैं? How can we learn? We can learn through the word of God. We can learn when we come into our knees and when we pray. We can learn. Amen. Hallelujah. He is not trying to trick us, but he's trying to let us know. He's not trying to hide something from you. There will be storms in your life, but where is your faith? Where is your action? Where is your action? Will you run away from it, or will you face it and say, yes, that's fine, because Jesus is with me. परमेश्वर मेरे साथ है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, I like this person Job. In Job, he was a person,
He never ever doubted God. He was praising the Lord. When situation arose in his life, when everything was taken away, सब कुछ ले लिया था, उस समय भी वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहा था. Amen. Hallelujah. Let's read in John chapter 16 verse 33. यूहन्ना उसकी 16 के 33 में हम पढ़ेंगे. It says over here, Hallelujah. Are you all blessed? Amen. Hallelujah. If you are blessed, I want you to write amen so that I would know that you are listening to me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It says in John chapter 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. Amen. You will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Because Jesus has overcome your sickness. Jesus has overcome your worries. Jesus has overcome your problems. यीशु मसीह ने ओवरकम कर लिया. यीशु मसीह ने उसको जीत लिया है. आपकी बीमारी को जीत लिया है यीशु मसीह ने. आपके उस हर एक प्रॉब्लम को यीशु मसीह ने जीत लिया है. Just trust in him. विश्वास करें परमेश्वर पे. Trust in him and he will do what he has to do. Amen. Hallelujah. Over here also, the disciples knew what Jesus could do. They knew that he had the power to overcome that storm. But they forgot. वो भूल गए थे. वो डर गए थे. They got scared because they saw that storm, that problem just coming into them. Today God is telling each one of us, do not be afraid. Amen. Hallelujah. Thirdly, storms can be used. Storms can use you to doubt God. You know, sometimes we try to doubt God. In verse 38, what happened? Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on cushion. Frantically, they woke him up shouting, Teacher, don't you even care that we are going to drown? You know, sometimes we try to doubt on God. God, I am sick, Lord. Lord, I don't have a job. Lord, what am I going to do, Lord? What are you doing? प्रभु आप क्या कर रहे हैं प्रभु? I don't have a job. I am sick, Lord. मेरे पास पैसे नहीं प्रभु, मैं क्या करूं? आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Sometimes there is fear of that. हम परमेश्वर को डाउट करना शुरू करते हैं. जब मुश्किलें आती हैं हम डाउट करते हैं परमेश्वर को. Amen. Hallelujah. But today God is telling, don't doubt on me. डाउट करने की जरूरत नहीं है. वो हमारे साथ है. आज, कल और हमेशा के लिए परमेश्वर हमारे साथ है. यहां पे क्या लिखा था? टीचर डोंट यू केयर दैट वी आर डाइंग. वो परमेश्वर को कह रहे हैं कि टीचर क्या आपको ये नहीं पता है कि हम मरने वाले हैं? What happened over here? You know, sometimes we hear these kind of situation. You know, हम कभी कोई सुनते हैं, कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it happening to me? Why is it happening to that brother? Why is it happening to that sister? Why she is sick all the time? Why there is no healing? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मैं आप पे विश्वास करता हूँ प्रभु. My whole family prays, my whole family trusts you, we worship you Lord, but why Lord is it happening with me all the time Lord? Why? Why am I not being blessed Lord? Why am I not? Why my friend is being blessed? क्यों मेरा जो दोस्त है वो अच्छा कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु? क्योंकि मेरा पूरा घराना आप पे विश्वास करता है, मेरा पूरा घराना आपके वचनों को पढ़ता है, हम आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु मेरे को आशीष क्यों नहीं मिल रही? मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे? मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं प्रभु? We try to doubt God, but I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके समय में नहीं परंतु परमेश्वर के समय में. It's only in God's time that God will lift you up. What we have to do is to just worship. We have to trust in Him and do what God has called us to do. Let's not doubt God. हम डाउट ना करें परमेश्वर पे, परंतु हम विश्वास करें परमेश्वर. क्या हम तैयार हैं परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए? Are we all ready to worship the Lord? Let's not have that doubting attitude. हम वो डाउट ना करें, उस एटीट्यूड का हम ना लेके आए. Let's not bring that attitude in our life.
Fourthly, storm teaches you about God. You know, when you face that storm, जब आप उस मुश्किलों को आप जब फेस करेंगे, तब आप परमेश्वर को और नजदीकी से जानेंगे. क्यों? क्योंकि जब मुश्किलें आएंगी आप परमेश्वर के और नजदीक जाएंगे, और जब आप नजदीक जाएंगे, when you will go more closer to God, He will sustain you, He will bless you, He will protect you, He will guide you, He will give you power, He will give you strength. Philippians 4:13 says that I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. He will teach you. वो आपको और सिखाएगा आप परमेश्वर के बारे में. Sometimes we say, Lord, I don't have a future, Lord. I don't have any plan, Lord. What will happen, Lord? I don't have a job, Lord. I don't know what will happen in my house. प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे वाइफ के पास भी जॉब नहीं. प्रभु हो सकता है कि सिर्फ ये महीने तक का हमारे पास पैसा है, अगले महीने हमारे पास पैसे कहां से आएगा प्रभु, मैं नहीं जानता हूं. मैं भाग रहा हूं प्रभु. लॉर्ड, आई एम रनिंग. यू नो द वे जोना रैन अवे. जोना भाग गया था. जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने उसको बोला निनेवा जाने के लिए, वो टार्शिश चला गया. लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम गॉड, बट लेट्स रन टू गॉड. हम परमेश्वर से दूर ना भागे, लेकिन हम परमेश्वर की ओर भागे. बिकॉज व्हेन स्टॉर्म कम्स, जब मुश्किलें, परेशानियां, बाधाएं आएंगी, हम और परमेश्वर के नजदीक जाएंगे. वी विल गो मोर क्लोजर टू गॉड, एंड व्हेन वी विल गो मोर क्लोजर टू गॉड, we will learn more about Him. We will experience His love in a new way. Amen. Today God wants you to experience Him in a new way. If you haven't done that, यदि आपने नहीं करा ऐसा, आज आप कर सकते हैं. भागे ना परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर के पास भागे, परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वो आपको और सिखाना चाहता है, वो आपको प्रेम करता है. He loves you and He wants to love you more and more. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you come out of the storm, you won't be the same person that walked in. जब आप उस मुश्किलों से निकलेंगे, when you will come out from that sickness which you have been for I don't know for how many months, हो सकता है सालों से आप बीमार पड़े हैं, जब परमेश्वर आपको चंगाई देगा, जब आप उसमें से निकलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं that you will never be that same person anymore. You will be a new person. You will be a changed person because God has changed you. God wants to do something new in your life. God wants to bless you. God wants to bless your house. God wants to bless your family, your finances, your situations, your problems in your life. But what you need to do right now, let's not doubt on God. जिस तरह उन चेलों ने परमेश्वर पे डाउट किया, the way these disciples, they were doubting, Lord, what will happen, Lord? The storm is coming, we will get drowned, Lord, we will die, my house, my family, Lord, my wife, my children, my this, that. But today God is telling you, trust in me, believe in me. Because when you will come out from the storm, you will not be that same person anymore. आप उस तरह के लोग नहीं रहेंगे, आप एक changed हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है. God has healed you. God has given you the blessings in your life. Amen. That is what storm is all about. That is what problem is all about. That is what challenge is all about. Amen. You will see Jesus differently. You will think differently. You will experience His love in a new way. Are you ready to do that? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Are you ready for that? Okay. There are things you can learn from the storm. There are things you can learn when you are in your sickness. When you are going through financial problem, you will learn, you will mature. Amen. Hallelujah. आपको maturity आएगी. You will mature in the word of God. You will mature the way you used to think before. You will mature. You will see in things in a new way. Your perspective will change. Your thinking will change. Your worship
will change in a new way. Are you ready to do that? Storms can change your perspective, and you can see life in eternal values. Amen. Hallelujah. If you are blessed this evening, I want you to write Amen. Hallelujah. यदि आप आशीषित हैं आज के इस वचन के द्वारा, मैं चाहता हूं कि आप Amen करके लिखें, ताकि मैं समझूं कि आप सुनूं कि आप मेरे को आप सुन पा रहे हैं, आप आशीषित हुए हैं. Hallelujah. Thank you so much, Sister Anisha. Thank you for joining in. Hallelujah. Storms can open your eyes. मुश्किलें आपकी आंखें खोल देंगी. It can cause a deep prayer life beyond your past. You will get more stronger in prayer. You will get more stronger, and you will come more closer to God. Amen. Hallelujah. God sometimes allows the storm to teach us and grow. God allowed that storm at that moment. Jesus allowed. He knew that there will be a storm. He just wanted to see how his disciples will react. And that is what Jesus said. Why are you so afraid? Do you still not have faith in me? Hallelujah. God allows storms to teach us and grow, to stretch our faith and to get us to align our actions to conform to God's plan. He is ready to work in your life. वो तैयार है परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए. क्या आप तैयार हैं उस नाव में बैठने के लिए? Are you ready to sit on that boat? Are you ready to sit? Even if you get sick, don't worry. Come into your knees and just start worshiping the Lord. If you don't have a job, just come into your knees and start worshiping the Lord. Say, Lord, I worship you, Father. I know, Lord, that I don't have a job right now. प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि इस मुश्किल घड़ी में भी प्रभु आप मुझे सिखा रहे हैं प्रभु. Lord, even in this difficult time, Lord, you are teaching me something new. You are revealing what you have for me. You are showing me, Lord, what you have for me, Lord. Lord, I want to get matured, Lord. I want to come more closer to you, Lord. I don't want to run away from you, Lord, but I want to come to you, Lord. I want to run to you, Lord, because I know that you are with me. मैं जानता हूं प्रभु कि आप मेरे साथ हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's all run to God. Let's not run away from God. So this evening I want to bless each one of you. आज के इस इवनिंग में मैं आप सभी को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से. I want to bless each one of you. I hope you all are blessed this evening. And thank you so much, because God has something great in store for each one of us. And there's one last thing I want to tell you. You know, not all storms come to disrupt your life. Some come to clear a path. You know, sometimes कभी कभी होता है जब मुश्किलें आती हैं ना, कभी कभी वो कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को नष्ट नहीं करेगा या आपके जीवन को खराब नहीं करेगा, लेकिन जब 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 मुश्किलें आती हैं तो आपके जीवन में कुछ गंदगी होती है जो परमेश्वर निकालना चाहता है उसको. You know, sometimes when storm comes, it doesn't just come to disturb your life, but there are in your life when you walk with God, जब आप परमेश्वर की राह पे चलते हैं, there are some unwanted things which God wants to clear. And what are those unwanted things? क्या है? हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा है, हो सकता है कि आप हम्बलनेस नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं. तो those are the things which God wants to clear it from your life. You know, it's something. क्या होता है जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, when we work on the computer,
So there are some unwanted file, temporary files, right? Temp, TEMP बोलते हैं उसको. So हम क्या करते हैं, स्टार्ट कमांड में जा करके हम परसेंटेज साइन लगा के TEMP फिर परसेंटेज लगा के एंटर करते हैं, तो उसमें कुछ टेम्प फाइल्स आती हैं. तो हम क्या करते हैं, उस टेम्प फाइल्स को अगर आप 1 महीने तक नहीं हटाएंगे, अगर आप उसको साइज चेक करेंगे तो वो जीबीज में जाती हैं, गीगाबाइट में, राइट. सो व्हाट हमको क्या करना पड़ता है, उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? वो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब आप उसको क्लियर करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो साफ, वो और तेज चलने लगता है, राइट. सो समटाइम्स even when we are walking with God, when we as believers, when we trust in the Lord, there are times when there are some unwanted things which are in your life which you are not able to remove. So what happens is God brings some kind of storm in your life so that God wants you to remove, God wants to clear it all. परमेश्वर उसको साफ करना चाहता है, एंड रिसाइकलिंग बिन में नहीं, उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहता है परमेश्वर. हम देख नहीं पाते, वी कैन नॉट सी दैट, बट गॉड सीज दैट, गॉड नोज दैट. सो व्हेन सच थिंग हैपेंस, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. डीमोटिवेट ना हो, हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें. लेट्स ऑल वर्शिप द लॉर्ड, लेट्स ऑल थैंक द लॉर्ड इवन एट दैट मोमेंट, बिकॉज गॉड वांट्स टू क्लियर सम थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. Might be anything, might be something which you are spending more time, more than God. God wants to clear that off. हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा एडिक्शन है जो आप नहीं निकल पा रहे हैं. आप प्रार्थना तो करते हैं, you worship the Lord, you pray, but there are some unwanted things sometimes God wants to remove. Let's all be ready for that. हम तैयार हों विश्वास पे, faithfully. Amen. हम डरे ना, भागे ना. Let's not be scared. Let's not run away, but let's run to God. Yes, Lord, I'm ready for that. I'm ready to remove the temp file from my life. I'm ready to remove the temporary files, because I know, Lord, that those temporary files might slow me down, and I don't want to be slow, Lord. I want to run to you, Lord. Okay?